Absorption and activity based costing, question number 2 from the resource pack. Explorer Limited produces two products, Y and Z, and has always used absorption costing to allocate overheads to each product. The directors are now considering adopting activity based costing. First requirement is to compare how overheads are apportioned using absorption costing and ABC costing. दोनों costing methods में हमने उसका comparison करना है, किस तरह explain करना है actually कि हम कैसे उनको calculate करते हैं. Activity based costing is based on the activities required to produce the item. Costs are collected into cost pools and apportioned to products based on the cost drivers. Activity based costing के अंदर जो मेन हमारा concept था, हम reasons देखते हैं कि cost किस वजह से आ रही है, उसको हम बोलते हैं cost drivers. और आपकी जो cost है उनको एक specific activity के अंदर या cost pool के अंदर जो हम उसको collect कर लेते हैं, that is called cost pool. So activity based costing is based on the activities required to produce them. हम उन activities को देखते हैं जिनकी वजह से वो cost आपकी आ रही है. Under absorption costing, costs are apportioned to cost centers using a suitable basis for apportionment. आपके different cost centers से production और service आप allocation, apportionment, reapportionment के थ्रू हम उनके अंदर cost जो है वो calculate करते थे. फिर जो total cost आती थी उन overheads को उस cost को हम absorb करते थे into products by using labor hours, machine hours और units. So then overheads in the cost centers are absorbed into products by direct labor hours, machine hours or units. Next part, additional information. The budgeted data for the two products for the year ending 31st December 2017 is as follows. We have two products Y and Z. Raw material used is 2 kilo and 3 kilo. Direct labor hours 0.75 hours and 1 hour. Unit selling price $19, $25, and the number of units produced and sales are 2,500 and 4,000. The cost of raw material is 2.5 per kilo and the labor force are paid $8 per hour. Annual overheads are as follows. We have three different overheads: machining, maintenance overheads, purchasing overheads, and selling and distribution overheads. Calculate the cost per unit for each product using absorption costing. पहले हमने absorption costing के through जो cost per unit find करनी है, and the total cost per unit is direct cost and indirect cost. डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमारे पास मटेरियल और लेबर की है. मटेरियल का और लेबर का रेट हमें बता दिया हुआ है और यूजेज भी बता दिया कितना है. तो मटेरियल आप सबसे पहले वाई के लिए मटेरियल यूजेज जो है दैट इज़ 2 kg एंड द रेट इज़ 2.5. तो 2 इंटू 2.5 आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी फॉर प्रोडक्ट वाई. 2 इंटू 2.5 मटीरियल की कॉस्ट आ गई और वाई जी के लिए 3 kg मटीरियल यूज़ हो रहा था एट रेट ऑफ 2.5 तो 7.5. Direct labor hours for the Y was 0.75 per unit and the rate was 0.8, so the total cost is $6. For Z, it was 1 labor hour and the rate is $8, so the total cost for labor is $8. नेक्स्ट ओवरहेड्स हमने ये देखना, उसके लिए हमें रफ वर्किंग पहले करनी पड़ेगी कि ओवरहेड्स हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कितने आएंगे. टोटल ओवरहेड्स अगर हम इन सबका टोटल कर दें 8500 प्लस 17000 प्लस 18750, द टोटल ओवरहेड्स फॉर दिस प्रोडक्शन इज 44250 एंड वी नीड द डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स. मशीन आवर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि हम लेबर आवर की बेसिस पे हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे. लेबर आवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? For product Y, per unit was 0.75. It is given in the question, 0.575 hours per unit. Multiply by total number of units 2500. तो Y use करेगा 1875. Z का per unit is taking 1 hour and total units are 4000. So the total hours are 4000 for Z. And the total production hours are 5875. Total overheads, budgeted overheads divided by budgeted hours is equal to $7.53 per labor hour. हमारे पास absorption rate आ गया. अब इनको हम प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे. डायरेक्ट कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए थे दोनों प्रोडक्ट्स के लिए. इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा रेट आ गया 7.53 इंटू 0.75 फॉर प्रोडक्ट वाई एंड 7.53 इंटू 1 फॉर प्रोडक्ट जी. टोटल आप करेंगे तो आपके पास ये टोटल कॉस्ट ईच यूनिट आ गया 16.65 फॉर वाई एंड 23.03 फॉर जी. Next, additional information. Number of production runs 20 and 16. Number of purchase order 55, 65. Number of sales deliveries 85 and 160. These are cost drivers. ऊपर उसने हमें कॉस्ट पूल बताए थे. ये तीनों कॉस्ट पूल थे: मशीन मेंटेनेंस ओवरहेड्स, परचेजिंग ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ की उसने टोटल कॉस्ट फाइंड कर ली. मीन्स दीज आर कॉस्ट पूल्स. नीचे अब उसने हमें कॉस्ट ड्राइवर्स भी बता दिए. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC कॉस्टिंग. तो इसके लिए हमें तीनों कॉस्ट पूल्स के लिए अलग से एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना होगा. अब
तो for machine maintenance, the cost driver will be number of production runs. For purchasing overheads, it will be number of purchase orders, and for selling and distribution overheads, it will be number of sale deliveries. तो इसका हम rate कैसे find करेंगे? Machine overheads 8500, the total overheads were 8500, and total machine production runs are 20 plus 16, 36. तो 8500 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू $236.11 पर प्रोडक्शन रन हमारे पास ओवरहेड रेट आ गया. देन परचेजिंग ओवरहेड्स आर 17,000 एंड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आर 55 प्लस 65, टोटल 120, रेट इज 141.67 per purchase order. Last cost is selling and distribution. Number of sale deliveries are 85 and 160. Total deliveries are 245. So the rate is $76.53 per sales delivery. अब इनको हम प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे. मशीन मेंटेनेंस 236.11 पर परचेज पर प्रोडक्शन रन हमारे पास कॉस्ट आई थी, एंड द प्रोडक्शन रन फॉर वाई वर 20. सो 236.11 इंटू 20, टोटल कॉस्ट इंटू वाई विल बी 4722, एंड 236.11 इंटू 16, the total cost for Z will be 3778. आप इन दोनों कॉस्ट को अगर टोटल करें 3778 एंड 4722, तो अगेन इट विल बिकम 8500 जो टोटल आपके मशीन मेंटेनेंस के ओवरहेड से. इसी तरह बाकी दोनों का भी परचेजिंग ओवरहेड्स का रेट हमारे पास आया था 141.67, एंड द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स फॉर वाई वर 55. द टोटल ओवरहेड्स आर 7792. 141.67 into 65, total overheads for Z are 9208, and total of both products are 17,000. Then selling and distribution overhead rate is 76.53 into 85, number of sales deliveries, and 76.53 into 160, Z की cost 12,245, total दोनों product की 18,750. Now the total overheads in both products are 19,019 for Y and 25,231 for Z. हमें फाइंड करनी है ABC कॉस्टिंग के थ्रू पर यूनिट कॉस्ट. तो हमें पर यूनिट ओवरहेड्स भी चाहिए, तो डिवाइड बाई 2500, वाई के यूनिट से 2500 और जी के यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे 4000. तो 19,019 डिवाइड बाई 2500, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इज 7.61. 25,231 डिवाइड बाई 4000, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इज 6.314 जी. डायरेक्ट मटेरियल वाज गिवन, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वो एज इट इज आ जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल फॉर वाई and direct labor for Y is 6. So material and labor. So this plus this, total cost under ABC costing for Y is 18.61. This plus this, total cost under ABC costing for product Z is 21.81. दोनों की कॉस्ट के अंदर जो है वो डिफरेंस आ गया. Y की जो पहले कॉस्ट थी वो कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, और Z की पहले ज़्यादा थी कॉस्ट 23.03, अब वो कम होगी 21.81 पे आ गई. नेक्स्ट डी पार्ट, कंपेयर द टोटल प्रॉफिट पर प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग. हमने प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, टोटल प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, नॉट द टोटल फैक्ट्री प्रॉफिट, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, बल्कि एक ईच प्रोडक्ट का टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है. सो प्रोडक्ट वाई under absorption costing, selling price is given in the question. It's $19 for Y and 25 for Z. It's given here. Selling price per unit 19 and 25. So the selling price minus cost will be profit per unit. Selling price per unit is 19, and the cost was 16.65 under absorption costing for product Y. This is 16.65 under absorption costing for product Y and 23.03 for product Z under absorption costing. So the profit per unit for Y is 2.35 and the number of units are 2,500. So the total profit is 5,875. Selling price for product Z is 25. The total cost is 23.03 per unit. Profit is 1.97. Number of units are 4,000. So the total profit under absorption costing is 7,880. Under ABC costing, selling price will remain the same. Cost is 18.61 for Y and 21.81 for Z. So the profit per unit is 0.39 and 3.19. Total profit is 975 for Y and 12,760 for Z. तो अगर आप देखेंगे Y का पहले प्रॉफिट ज़्यादा था, अब कम हो गया, और Z का पहले प्रॉफिट कम था, अब जो है ज़्यादा हो गया. टोटल बिजनेस का प्रॉफिट जो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी इक्वल, क्योंकि बिजनेस के टोटल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कॉस्टिंग मेथड जो है वो यूज़ कर लें.
नेक्स्ट पार्ट इज कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर आपने कमेंट करना है। यू हैव ओनली 1 मार्क, तो सिंपल है। डिफरेंट प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स। दोनों का डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा है डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड जो हमने यूज़ किए हैं एब्जॉर्प्शन और ABC से। नेक्स्ट पार्ट, एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट ABC शुड बी अडॉप्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपने इसकी फेवर में लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो कि इट इज़ मोर रिलायबल कॉस्टिंग मेथड। इसके अगेंस्ट लिखना है तो इट इज़ डिफिकल्ट to calculate. Since the costs are only assigned to the products that require the activity, it is more realistic. Activity-based costing should be adopted. It is more realistic, more reliable. तो इसको adopt कर लेना चाहिए। Not using ABC, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, more time consuming, requires specialist knowledge. Final 1 mark will be for your decision.